I think we should be live any minute now, and हमने अपनी session 7 बजे officially start करनी है, but you can't take a chance with technology. Dr. Vandana, I am just so grateful that you're here. Thank you very, very much for The being pleasure here. is all mine, like always. Okay, और आप हरदम, you're always available to give us really good information on food and diabetes. So, how has your experience been with COVID? We are going to wait till 7 o'clock Yeah. to officially kickstart our event. तो आपका experience in the meantime कैसा रहा है with diabetes, COVID and patients? See, as time has now passed, because it's been quite a couple of months now that we have been facing this problem called COVID, I've always said we have to start living with it till the time we don't get the solution, a fixed solution, जो कि अभी I can't foresee, right? So I firmly believe that we should all start living our lives in a usual way, but at the same time we should take all the mandatory precautions which we can and which we should, and we should step out only if it is really needed. Because see, initially lockdown ki wajah se we all were in the house and we were all protected, but now the cases are also rising, but rightly so, because people have to go out. आपको जाके अपने जो भी आप अगर कहीं काम करते हो, आप शॉप्स पे हो, शोरूम्स पे हो, क्लिनिक्स पे हो, you have to go and open everything, and public dealing is starting, right? So I think इस time पे it's more important for you to now work on your immunity, because you have more chances of catching COVID right now. Also, your immunity will be the only one which would be fighting for you, because there is no medicine. And social distancing is very important. Sanitizing, washing hands, hygiene practices, these are the only things जो आप कर सकते हो personally to fight this particular problem. So I think हमें उन चीजों पे concentrate करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, because vaccination तो हम नहीं बना सकते, right? और अंदर हम बैठ नहीं सकते for more time. So I think that we should all start working towards how to live with this problem for maybe another couple of months, than just getting scared and sitting inside and not doing anything about it. In fact, Dr. Amrish Mittal had some time back, जब उनसे हमने बातचीत की थी, ये said हमारे पास वैक्सीन तो है, क्यों बोल रहे लोग वैक्सीन नहीं है? So I said, what do you mean? So he said, why? Mask, social distancing, hand washing. इससे ज़्यादा चाहिए. Exactly. So जो चीज हमारे हाथ में है, we should not underestimate that much, and we should be ready. Even if you get this infection, you would definitely come out of it. You have to make your body strong. I have come across so many people who are having who've already gone through this 14 days of COVID period, and they have just experienced simple fever, 99, 100 fever, and little bit of cough. So it all at the end of the day boils down to your immunity. आप जितना अच्छा अपनी बॉडी को रखेंगे, उतना आप इजीली इससे बाहर आ जाएंगे. It's a little difficult for people who are on the older side, people who have comorbidities, diabetics. That is why we are here discussing this topic today. So for these people, yes, my heart goes out, but I still think we can only and only work on our diets, we can work on our exercise, we can work on our bodies, and we have to take care of the mask, sanitization, and social distancing. Okay, so it's now 7 o'clock and we can officially kickstart the program. We went live थोड़ा पहले हम live चले गए थे, just to make sure that we'll start on time. So welcome back to another Fam Health live session. आज का topic बड़ा interesting है. ये हफ्ता we're doing a run up to Diwali and World Diabetes Day. इत्तेफाक से, like I mentioned earlier, ये दोनों चीजें, World Diabetes Day and Diwali is on the same day. अब दिवाली की बात जब करते हैं तो मिठाई है, टेम्पटेशन है, फ्राइड चीजें हैं. यस्टरडे पता नहीं आपने डॉक्टर धीरज कपूर की सेशन देखे कि नहीं, जो मैंने उनको इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि दिवाली है तो पूरियां तो होंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा घी या तेल तो डलेगा खाने में. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट we have to deal with food, and who doesn't like food? Ask me, I'm a foodie. So we're going to talk about Diwali, temptation, food, and the problem is, and अभी मैं जैसे डॉक्टर वंदना के साथ बात कर रही थी, all about COVID. So COVID भी है, ये थोड़ा अलग साल है.
तो सबसे पहले तो may I introduce you yet once again डॉक्टर वंदना वर्मा. आप हमसे बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं. Thank you very very much. We are very blessed. You Thank you. are the founder of Fitness for All. You are a prominent feature on Tata Sky Family Health, our TV platform. We have Yeah. done so many live sessions with you, and you know we have a line of people who want to consult with you. Okay, तो टीवी देख के ना लोग हमें कहते कि नहीं डॉक्टर वंदना से बात करनी है हमें. Thank you so much. Specialist, welcome back. Thank you. Thank you. Now you've been treating patients with diabetes for over 10 years or close to 10 years now. Yeah, yeah. So आपसे ज़्यादा expertise किसको पता होगी? तो we thought were the best person to give us advice कि करना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. Okay. सबसे पहले give us a broad overview of what we should be looking at, and then कि आप क्या क्या करने वाले इस सेशन में, किस टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, and we'll restrict our conversation to about half an hour, 40 minutes. I know you made some points somewhere before, so you give us an overview because I do want to spend the next 5 minutes after that asking you community questions. Okay. So आप थोड़ा overview दें because food and diabetes. Sure. Thank you for the wonderful introduction, Asha. Firstly, and secondly, today's session is all about diabetes. It's about festivities. It is about COVID. So it's it's like a mix-up, a mash-up. And कोई एक चीज दूसरी चीज से ताल नहीं खाती. So diabetes, festivities, COVID, तीनों चीजें मिलके, so we are going to try to get this all in one line today and see how can we balance these three things and enjoy the festival sitting at home and being safe, right? So I've come up with some very interesting facts today. So कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिसको अगर आप थोड़ा भी ध्यान रखते हैं या फिर उसको करते हैं, फॉलो करते हैं, यू कैन एंजॉय योर फेस्टिवल. एट द सेम टाइम आप अपने शुगर लेवल्स को खराब नहीं करेंगे, आप अपने डॉक्टर्स को नाराज नहीं करेंगे जिनसे आप मेडिकेशन ले रहे हैं. सो दीज आर सिंपल थिंग्स बट दे विल गो अ लॉन्ग वे. ये टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, which you have to wait for some time to hear them out. Thank you. This sounds really promising because as you know, Dr. Vandana, you've been very supportive in that area. हम communities run करते हैं. We've got a very successful support group on diabetes in particular. Community is on famhealth.in/community on our website. वहाँ पे हमारी entire endeavor या quest है ताकि लोग जुड़े और एक दूसरे का सहारा and support बन पाए. Lots of people keep posting questions. अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं diabetes और food के बारे में, I promise you we will reach out to Dr. Vandana to answer those questions. So Dr. Vandana, not directly related to Diwali, but can you give us, there are a few questions that people have been posting over the last 1 week. तो जल्दी से ये खत्म कर लेते हैं. सबसे पहले एक community member ने पूछा है, what kind of vegetable or fruits can be eaten if a person is diabetic? Okay. And the second question is matar, which is green peas. Are they good for diabetes or bad? Okay. इसका आंसर मैं एक बहुत सिंपल तरीके से देना चाहूंगी. सबसे पहले आज तक किसी ने ये नहीं पूछा, is a biscuit bad for diabetes or is fried namkeen bad for diabetics? राइट वो क्योंकि हम सब अज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है, इट्स ऑल फाइन, डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, फाइबर है, ये है, हम खा लेंगे. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक थंब रूल बना लीजिए आप अपने लिए. कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल जो कि नेचर्स प्रोड्यूस है is never bad for a diabetic or for anybody else, right? For diabetics, moderation is the key. कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो हमें मॉडरेशन में कंज्यूम करने हैं, बट कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे हमें पूरी तरीके से नहीं खाना है. जो चीजें हमें नहीं खानी है वो हम बॉदर भी नहीं करते पूछना, बिकॉज वो हम खा लेते हैं इन एनी केस. सो दैट इज वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल द व्यूअर्स टुडे कि कोई भी वेजिटेबल हो, चाहे वो ग्रीन पीज हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो कोई भी वेजिटेबल हो जो आपके माइंड में स्केप्टिकल हो, आप बनानास हो, मैंगोज हो, all these fruits and vegetables you can consume easily,
they are all healthy and they come with a lot of nutrition also. So हम सिर्फ empty calories नहीं खा रहे, हम उसके साथ बहुत nutrition भी ले रहे हैं अपनी body में, जो कि different forms में हमें help करेगा. So this is my answer to your question. Please eat all fruits and vegetables, but in moderation. One more thing I would like to specify. आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक चार्ट है, आप जाके गूगल से उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, कुछ मॉडरेट में और कुछ हाई में, राइट? वो आपको एक फेयर इंडिकेशन देंगे कि कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप लिबरली खा सकते हैं, कौन से मॉडरेशन में खा सकते हैं और कौन से आप कम खाएंगे. सो दैट इज दी ओनली थिंग विच यू हैव टू फॉलो, कि कम कौन सा खाना है और abundant कौन सा खा सकते हैं. नहीं खाना is not an option, right? So you can follow that chart. So green peas हमारे moderate glycemic index में आते हैं, so there is no problem, you can have it. So some vegetables like pumpkin हो गया, या फिर vegetable like beetroot, ये है थोड़े से higher on glycemic index, तो इनको हम consume कम करते हैं diabetic diet में. But otherwise we don't skip any fruit or vegetable from a diabetic diet. It's important to consume everything. Okay, thank you so much. I hope not just this, but कल डॉक्टर धीरज ने ये भी बताया कि potatoes are fine in moderation. Yeah, of course. Potato, again, as I said, कोई भी fruit या vegetable is not fine. Even mangoes, अगर आप moderation में खा सकते हैं. I always tell everybody, अब जैसे अब mangoes का season आया, जो छोटी variety होती है mango की, जिसे हम पुप्पी बोलते हैं. So they are very small mangoes. You can, if you know, you can have 2 mangoes, छोटे छोटे, पूरे खा सकते हो. आप अगर सफेदा खा रहे हो, which is a bigger mango and a, you know, more pulpy, you can consider having a gutli, because गुटली में भी काफी pulp होता है. So you have to just balance the amount you're eating and not that you will not eat it. Having a mango is better than having a biscuit. So it's as simple as that. आप अपने चाय के साथ जो सुबह 2 बिस्किट्स खा रहे हैं उसको छोड़ दो, उसकी जगह एक मैंगो खा लो, I'll be happier. Oh really? Yeah. Okay, because biscuits are maida. Biscuits are maida, it is processed, it is packaged, it is made and kept in the packet for I don't know how long with what shelf life. So I always am a firm believer of eating all the things which are produced by nature rather than something which is packed and kept in a container for how long. You don't even know how many things are inside. Okay, moving on. नहीं तो हम यही बात करते रहेंगे. Yeah. We have a long lineup. And we have got a very, very strict timeline. Second question, can a diabetic patient have products like brown sugar, tea and coffee without sugar, or milk products? Okay, so see, firstly, brown sugar is similar to white sugar. Okay, so कोई बड़ा difference नहीं है, थोड़ा सा mineral value brown sugar का ज़्यादा होता है. White is no mineral at all, it is just pure calories. So I would say that you should completely avoid sugar, चाहे वो white हो या brown हो. So sugar should not be consumed. Tea and coffee is perfectly fine. You can have tea and coffee, but no added sugar is preferred. For diabetics, जिनका uncontrolled diabetes, especially, they should consider taking stevia or some sugar-free options. So brown sugar is not a good option. And जहाँ तक milk products का सवाल है, milk में भी sugar होता है, right? It has lactose. So I would always say go for skimmed milk, which is lower on fat, dairy. Lactose free milk भी कर सकते हैं, almond milk भी कर सकते हैं. It all depends आपका sugar level कितना है, कितने control में. अगर आपका diabetic control चल रहा है, it's a good control, then you can consider having milk also. But अगर आपका sugar levels are not controlled and your HbA1c is above 7 or 7.5, then you have to cut down on dairy also. And go for skimmed dairy products rather than taking toned or full cream completely. Okay, तो आप कह रहे हैं brown sugar is the same. मैं थोड़ा हिंदी में convert करने की कोशिश कर रही हूँ. आप कह रहे हो कि दूध, पनीर वगैरह is not very good अगर अच्छी चीजें नहीं है, अगर आपका sugar level बहुत high है. Exactly, अगर आपका level थोड़े भी ज्यादा है तो इसको आपको control करना पड़ेगा. And उसमें आप फिर double tone, skim घर पे बनाइए पनीर अपना. Do that practice rather than आप बाहर का लाया हुआ पनीर खाएं. Okay, and what about chai coffee? चाय कॉफी is fine as far as अगर उसमें बस चीनी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूध बहुत कम है. एक सवाल अभी आया है नितिन का. थैंक यू नितिन. व्हाट अबाउट रस्क्स? शायद हम बिस्किट की बात कर रहे हैं, तो रस्क जो मिलते हैं. I don't recommend rusk biscuits anything for diabetics. I always tell them
कि आप अपनी चाय के साथ नट्स ले लीजिए, आमंड्स, वॉलनट्स, इवन कैश्यूज आर फाइन. You can take pistas, you can take fox nuts, you can take bhune chane. There are so many more options. Please don't go for rusks and biscuits and spoil your पूरे दिन का sugar levels, because बहुत diabetics आते हैं सुबह में जो 2 या 3 रस्क लेते हैं and then they skip breakfast. तो again वो आपको कुछ nutrition नहीं दे रहा है. At the same time it is increasing your sugar level. Okay, moving on. Thank you very much, Nitin. I hope that answers your question. But this is only for diabetes, right? I mean, For diabetics or people who want to reduce weight also. Okay, so because I thought they were like atta based, so wo अच्छे ही होंगे, but yeah, they're packaged, right? Yes. Okay, moving I on. am not a very big fan of packaged products, so. Okay, I know, I can sense that. That's why I said moving on. And you know what, Asha, these things become a habit. ये एक हैबिट फॉर्मिंग चीज है, ये वंस इन अ वाइल नहीं है. अगर आप मुझे कहो ना वंस इन अ वाइल कैन आई हैव बिस्किट और रस्क, ऑफ कोर्स यू कैन हैव, पर ये सुबह उठ के चाय पीना विद रस्क इज अ हैबिट फॉर्मिंग थिंग. ये आप सालों साल करते हो इस प्रैक्टिस को, सो हमें इसे टोटली बंद करना पड़ेगा. अगर आप इसको सिर्फ हफ्ते में एक दिन कर रहे हो, आई विल से यू कैन गो अहेड एंड डू इट, नो प्रॉब्लम. बट जिन चीजों को हमने रोज करना है, दोस प्रैक्टिसेस शुड बी द राइट वन. ओके, एक कम्युनिटी का सवाल अभी अभी पोस्ट किया उन्होंने, Doc, and it's related to what we're talking about. Can we give nutrition booster powders like Complan, Horlicks, although हम brand name नहीं ले सकते, but you know that's only to establish the genre we're talking about, in milk in moderation. Yes, and of how course much we is can. moderation? और moderation है क्या? See again, आप जो भी प्रोडक्ट बच्चे को दे रहे हैं, आप एक बार उसके शुगर लेवल्स चेक कर लीजिए. हाँ, राइट, उसके शुगर लेवल्स चेक कर लीजिए. कुछ प्रोडक्ट्स में थोड़ा ज्यादा शुगर लेवल होता है, कुछ में कम होता है. यू ऑल्सो सी कि आपके बच्चे की नीड्स क्या है. राइट, अगर आपका बच्चा थोड़ा ओबीस साइड पे है तो आप अवॉइड कर सकते हैं शुगर वाले. उसमें फिर आप घर में बना हुआ कोई भी मॉल्ट बना के यूज कर सकते हैं. बच्चे के लिए आप सत्तू का दूध भी दे सकते हैं. बट ऑन एन एवरेज इन ये जितने भी बच्चों के लिए एनहांसर्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड दे आर परफेक्टली फाइन. दे आर मेड इन अ वे कि वो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. Okay, we're still not done with the rusk conversation. So the retort which has come from Nitin is कि अगर वो सूजी, and सूजी is good, right? I mean it's a good this thing. अगर वो सूजी based है और sugar free है, तब भी आप recommend नहीं करेंगे? मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एनीथिंग. एंड शुगर फ्री तो बिल्कुल भी मेरा मतलब आई डोंट नो हाउ इट इज मेड. आई एम नॉट सिटिंग देयर व्हाइल इट इज मेड. एंड कोई भी चीज पैकेज्ड है, मुझे वो चीज नहीं पसंद. तो मैं हमेशा मूसली भी में प्रॉब्लम होगी आपको? मुझे प्रॉब्लम है, यस, बट अगेन दे आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग थिंग्स. अगर आप म्यूसली ले रहे हैं, म्यूसली अगेन, अब म्यूसली किस तरीके से बनी है? इज इट हाई ऑन ओट्स? अगर ओट्स में हाई है तो रोल्ड ओट्स उसके अंदर कितने कंटेंट में डले हुए हैं, कितने नट्स डले हैं, कितना फाइबर डला है. नाउ ऑल्सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट सूजी, सूजी इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कार्ब, राइट? सूजी इज अ सिंपल कार्ब. सूजी बहुत जल्दी बॉडी में शुगर लेवल्स को राइज करता है. सो सूजी इज नॉट अ वेरी गुड ग्रेन फॉर डायबिटिक्स एज इट इज. So उनके लिए it's always better to go for something which is a complex carb like quinoa, dalia, whole wheat, ragi. These are the better grains. So अगर रागी के रस्क मिल जाएं आपको, whole wheat रस्क मिल जाएं, and try getting it from people who make fresher stocks. So कोई homemade chef हो जो घर पे बना रहे हैं, जो आपको बोले कि हमने घर पे बनाया है, 15 days के अंदर कंज्यूम करना है, that is always better. या घर पे बनाए हुए granulas for that matter are very good. Okay, so we're flooded and we will get to Diwali, but we're just so flooded with questions, and before they disappear I have to cover some of them. एक तो dates made sweets good or bad? Dates, khajur wali sweets. See, khajur is very good in a way. It is very sweet also. So diabetics के लिए again khajur moderation में ठीक रहेगा. बट खजूर के अंदर काफी अच्छे मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंड इट आल्सो हैज फाइबर. सो इसीलिए उसका रेगुलेशन बॉडी में जो शुगर लेवल्स का रेगुलेशन है, इट हैपेंस इन अ बेटर वे. सो हैविंग डेट्स इज बेटर देन हैविंग एनी अदर फॉर्म ऑफ स्वीट्स फॉर डायबिटिक्स. ओके, दैट्स नाइस. देयर इज अ इवन लाइक एन अंजीर एंड खजूर, ये ड्राई फ्रूट्स को आप अपने कोई भी डेजर्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. सूजी का हलवा इज बैड, क्लियरली.
उसमें नहीं कर सकते हो, बट बाकी सब ठीक है. Okay, and we're going to soon. I'm going to cover the questions, but एक सवाल था कि डायबिटिक पेशेंट्स रोज एक ग्लास ऑफ मिल्क पी सकते हैं क्या? Of course they can have, as I said, थोड़ा double toned दूध पीजिए आप, rather than having a toned or a full cream milk. Okay, thank you. Sanya पूछ रही है, what can I do to prevent diabetes? Thank you so much, Sanya. आप please famhealth.in पे look for diabetes and आप बहुत सारी information पढ़ सकते हैं उस पे. I would rather focus on Diwali, temptation, COVID भी है, and food. I'm just trying to run through all the basic questions we all have. But पढ़ने के लिए please go there. हमारी food की बहुत ज़्यादा बड़ी section है. I'm sure you'll get the content you're looking for. But thank you for joining us and asking this question. A question आया है, please give a few breakfast ideas for kids which are healthy and relatively low in carb. And please don't say chila. Okay, I'll not say chila. How about a pancake? Which is a chila, yeah. So, Then you'll say dal no. mein banao. No. So you can make a very nice banana and oats pancake for kids. So आप oats को, rolled oats को grind कर लीजिए. You can add little bit of milk into it and you can add banana and just उसको grind करके you make it on the tawa. It comes out to be very tasty. उसके ऊपर लगाने के लिए Nutella की जगह you can add almond with cocoa powder का this thing spread. So you can just grind almonds को आप वो soak करके रख लीजिए. And morning में उसको grind करिए, add some cocoa powder and just spread it on the oats का pancake and it turns out to be very tasty. You can even add egg to make it more wholesome. Okay, you know, we keep promising to shoot videos with you cooking and we will get there soon, one day. हाँ, जो आप बोल रहे हो तो खुद दिखाओ बना के, तो तब हम right? Okay. Sorry, excuse me. Coming back to the last 2-3 questions only. What should be the diet? And ये community question है. What should be the diet for diabetic patients who are working in field jobs, especially in COVID times? Which? Okay. See, basically, diabetic चाहे field job में हो या घर पे हो, the diet would remain the same. Firstly, right? It's not going to change much. But I would like to specify 2 points क्योंकि COVID की बात हो रही है और डाइट की बात हो रही है फॉर डायबिटिक्स. नंबर 1, जो लोग फील्ड जॉब में है वो जनरली अपने मील टाइमिंग्स का ध्यान नहीं देते हैं. सो आई वुड वांट देम टू बी मोर रेगुलर विद द टाइमिंग्स बिकॉज डायबिटिक डाइट में टाइमिंग इज एवरीथिंग. So you have to have your frequent meals, you have to have on time. आप कोशिश करके अपना breakfast, lunch, evening, dinner का जो भी time है उसको आप ऊपर नीचे ना करिए because दवाई खाने का भी एक time होता है उसके लिए. So it all depends on what time you're having your food. So it's one thing which is very important is time for field job people. Secondly, because it is COVID, and as I said, uncontrolled diabetes can be a complication for COVID. I would recommend कि आप अपनी immunity पे थोड़ा extra ध्यान दीजिए इस time पे. So for immunity, as we have discussed it so many times, please include vitamin C fruits in your diet. आप vitamin C के supplements लीजिए, at least Limc जो है वो 2 times आप consume करिए 500 mg की. उसके बाद vitamin D का intake पूरा रखिए. Zinc supplements once a day please consume करिए because that is very good for respiratory problems. And antioxidants and anti-inflammatory foods like garlic, onions, haldi and ginger, these are very good anti-inflammatory foods. तो इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करिए अपनी डाइट में. हल्दी का हल्दी और काली मिर्च हो गया और दालचीनी हो गया, इन चीजों को आप मिक्स करके you can make a काढ़ा. There are so many types of kadhas which people have now invented and every WhatsApp message is full of kadhas. So you can consider having at least 1 glass of kadha in the day and include basil or tulsi in your diet. ठीक है. इनफैक्ट बेसिल से लेके एक जुड़ा सवाल है. आई डोंट नो बेसिल आर्क क्या होता है, बट एक कम्युनिटी मेंबर ने पूछा है कि कितने ड्रॉप्स बेसिल आर्क के एक दिन में ले सकते हैं एंड कैन वी टेक इट रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर. Are you familiar with basil arc? See, I don't know what basil arc is. If it is arc, कई लोग अर्क बोलते हैं, basil arc. Arc. I'm sorry, it could be AR. So arc is just drops. So basil drops.
Basil is very good when it comes to antioxidant properties, right? Tulsi and basil are इनके पास healing properties होती हैं. So it is good to consume basil. आप अपनी चाय में डाल लीजिए, आप अपने खाने में use करिए, salads में use करिए. So you can have a handful of basil every day, 5 to 6 or 7 pattas in the day if you have a homegrown basil, nothing like it. And you can use it in drops form also. But chewing a fresh basil in the morning is also equally very good. And even tulsi. और वो तो फ्रेशर है ना, मतलब Yeah. होम ग्रोन बस प्रोड्यूस. थोड़ा धोया खा लिया. Easy. Okay. Last question जो community पे post हुआ है, but and thank you Miss Pereira for joining us again, and I'll come to your question. Last question जो community पे है वो है, does giloy, neem and methi control diabetes? Yes, all these three have proven to produce good results in diabetics. It is also because they have polyphenols, they have flavonoids, they have all the desired compounds which are needed for fighting sugar levels. And also it has been seen कि ये हमारा sugar absorption जो है वो slow कर देते हैं body में, जिसकी वजह से levels एकदम से hike नहीं होते हैं. So they are very good if consumed in the right way. मेथी दाना specifically has there are many studies which have proven मेथी दाना to be very beneficial. So morning में अगर आप मेथी दाने को soak करके उसको आप consume करते हैं, उसके पानी को, and you can just chew that मेथी दाना and then spit it off. It's very good for controlling diabetes. Okay. But you have to also follow the rest of the day and the diet in a proper way. सिर्फ ये चीजें खाने से नहीं आपका डायबिटीज कंट्रोल होगा. Medicines, exercise and food also has to be hand in hand. But these things do facilitate the effect. Okay. So, we had a active participation कल Miss Pereira ने type 1 patient की बात हुई थी. She is related to somebody. तो उन्होंने ये पूछा है, शायद हमने इतनी fruits की बात की है to eat in moderation. Her question is कि जो type 1 वाले diabetic population है वो fruit खा सकते हैं क्या? And if so, कौन से खाने चाहिए? See, they can again have all fruits, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं उनको मॉडरेशन में खाना पड़ेगा. टाइप 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है दैन टाइप 2, बिकॉज टाइप 1 में इंसुलिन लेवल्स बहुत ज्यादा अप डाउन होते हैं, राइट? आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा अप डाउन होते हैं, एकदम से आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं और एकदम से आपके शुगर लेवल्स एलिवेट हो जाते हैं. सो यू हैव टू रियली वॉच व्हाट यू ईट. So you have to be a little more careful when you are having a type 1 diabetes. So go through the list of glycemic index fruits and vegetables. That would be really helpful. And जितने भी fruits vegetables खा रहे हैं उसको moderation में रखिए, because fruits के अंदर sugar है. So moderation आपको रखना पड़ेगा for type 1 diabetes. You can't have liberally. Okay. And also Miss Pereira, I hope आपको हमारा, I hope you read my message of yesterday. You wanted connect with a doctor. So in case you're still interested, support@famhealth.in. If you can send your phone number on that, I'd rather not make your phone number public. This is a public forum. Send us a mail and we will connect you to Dr. Dheeraj, and in case you're interested in knowing more, to Dr. Vandana. Okay. चलिए, तो ये तो थे सवाल जो हमने प्रॉमिस किया था that famhealth.in/community जो हमारे मेंबर्स हैं उनको पहला मौका सवाल के आंसर्स देने का मिलेगा. Now let's turn to Diwali, and thank you very much. एक community का question आया है, and I know I'm going to keep quiet after this and I'll let you talk. I know you're coughing, there's change of weather going on. So, yeah, there is a lot of pollution. Yeah. So in case we don't cover all these questions, right? Please, famhealth.in/community पे आप please post करिए सारे questions. We'll make sure that Dr. Vandana answers all of the questions. तो एक दिवाली, and that's a great starting point. एक जो question आया है, normally during Diwali we eat heavy food. And then when we want to give our stomach a rest, dal chawal seems to be a comfort food. For diabetics, is there some other comfort food that is easy on the stomach? ये last question है आज के लिए. उसके बाद you please run us through what we need to know on Diwali. Okay. So when you say comfort food for diabetics, again, a khichdi is a very nice comfort food.
So just to wind up a very heavy day, if you want to just have something जो थोड़ा सा आपका digestion भी easier रहे and you don't feel acidic, खिचड़ी is the way to be. खिचड़ी is a whole food, उसके अंदर सारी चीजें हैं. There is rice, there is dal, there is vegetable. Diabetics जो भी चीज consume करें, they should make sure कि उसमें vegetable content है, because we need fiber. So आप जो भी consume कर रहे हैं उसमें fiber जरूर रखिए. Rice is okay, you're saying, in moderation. Rice is fine, yes. Rice is fine in moderation. I would always recommend अगर आप rice use कर रहे हैं तो आप उसका starch remove कर लीजिए. Okay, which is कि वो उसको boil करके पानी फेंक दो. हाँ जी. ठीक है जी. All right. Now tell us about diabetes. COVID है. पिछले साल आप आए थे इसी टाइम पे. Fabulous Life हमने किया था. I remember जब आपने कहा था अगर तुम जा रहे हो बाहर और parties हो रही हैं, this is how you can, you gave us some wonderful tips and tricks on how to deal with पहले खा लो वगैरह. अब तो इतनी parties hopefully नहीं हो रही हैं, and I urge everybody please try and stay at home. तो घर पे क्या करें? What are the Yes, so this year the tips are a little different from the last year, because last year जो tips दी गई थी वो बिल्कुल पार्टी के हिसाब से दी गई थी. इस बारी पार्टी का पॉइंट एक ही है, बाकी सारे पॉइंट्स रेगुलर पॉइंट्स हैं जो कि अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने फेस्टिवल्स को हेल्दी वे में एंजॉय कर पाएंगे और हमारे को बीमार होके घर में नहीं बैठना पड़ेगा. सो द फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर इज ईट क्लीन, राइट? सो कोशिश करिए आप जो भी खा रहे हैं वो क्लीन हो, घर का बना हो. ट्राई हैविंग थिंग्स विच हैव मोर फाइबर, जो हमारा थंब रूल है फॉर डायबिटिक्स. सो अगर आपको कोई मिठाई खाने का मन है तो आप ट्राई करिए कि अगर आप घर पे कुछ बना के खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक सिंपल पाफरे बना रहे हैं या एक कर्ड के अंदर खूब सारे फ्रूट्स डाल रहे हैं, सो यू आर एडिंग फाइबर. आप उसके अंदर नट्स ऐड कर लीजिए, सीड्स ऐड कर लीजिए. यू कैन ऐड पंपकिन सीड्स, यू कैन ऐड वाटरमेलन सीड्स, यू कैन ऐड समबर सीड्स. So you can add so many seeds, you can add almonds, walnuts, and make it a whole meal instead of, going and having something from outside. So a fried is definitely a no, rather than whatever you make at home, even if it is a roti, sabzi, dal, chawal, it's a biryani, it's curry, it's rajma, chane, all the fancy foods which we eat, but वो हमारे घर का बना हुआ खाना हो. So that is one thing which is very good to follow right now. Secondly, I would want that आप रेड मीट्स को अवॉइड करें, बिकॉज अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आई वुड वांट कि आप ज्यादातर लीन मीट की तरफ जाएं, फिश को कंज्यूम करें, चिकन को कंज्यूम करें. चिकन में भी कोशिश करिए लीन चिकन को कंज्यूम करिए, rather than having a leg piece, go for a breast piece. So these are few things which you can do for eating clean. Next point which I would like to share is portion control. पोर्शन कंट्रोल में हमेशा ही आप लोगों के आगे स्पेसिफाई करती हूँ, बिकॉज पोर्शन कंट्रोल इज समथिंग जिससे हम सब कुछ खा पाते हैं. सो जो भी आपके घर में बना है, यू डोंट हैव टू आपको अपना मन मारने की जरूरत नहीं है. सो अगर आप मुझे कहो कि मैम पूरी बनी है या फिर जलेबी बनी है या फिर रसगुल्ला है, कोई भी डिश हो, अगर आप उसको पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, you can consume it. But if you can't do a portion control, you will have to completely say no to it. Yeah, please tell me. For cheat days or roz? See, portion control has to be done every day and more on cheat days. Because cheat days पे there is so much of variety कि आप सब कुछ try करना चाहते हो. So अगर 10 चीजें बनी है, आप उसमें से 8 चीजें खाना चाह रहे हो, तो portion control करना पड़ेगा. On a regular day, you can always eat little less and keep a space for your favorite मीठा, right? So आपने suppose कर लो आधी रोटी कम खाई और आपने चाहा कि मैं अपने favorite चीज के लिए थोड़ी सी जगह रखूं, that can be done. But अगर आप किसी पार्टी पे हो या अगर आपको पता है आज दिवाली है, आज रात को बहुत अच्छी चीजें बनेंगी या फिर सुबह से ही आज खाना पीना होगा, so you will have to do portion control. आप breakfast में थोड़ा खाइए, lunch में थोड़ा खाइए, dinner में थोड़ा खाइए, rather than having every meal भर के. Because again, as every expert would tell you, एक दिन से आपके पूरे हफ्ते 10 दिन की मेहनत खराब हो जाती है. And we don't want that. But at the same time, we also want to enjoy, right? We also want to have a time of a life. So उसके लिए portion control will go a very long way. Secondly, don't overdo sweets. आप कहाँ चले गए? I can't hear you. Yeah, can you hear me now? Perfect. So you were saying don't overdo sweets. Yeah, so I was saying don't overdo sweets. So अगर आप खा रहे हो
तो उसमें ये नहीं है कि आपने रसमलाई है, आपने 2 से 3 पीस ले लिए, या you've had gulab jamun also, rasmalai also, kaju katli also, then nothing can save you. Even portion control won't be helpful. So try choosing your favorite poison for for spoiling your diet. So just see कि आपको best क्या लग रहा है इनमें से, so उसको आप follow करिए और portion control करिए. तो It मेरा will not be portion that tough. interpretation versus your portion interpretation में तो बड़ा variance होगा. Okay, so for that I would say कि जैसे कि आप एक बड़ी प्लेट लेके खाना खाने जाते हैं, so whole plate, आप उसे quarter plate में convert कर दीजिए, right? So जब आप अपना खाना डाल रहे हैं तो छोटी quarter plate में डालिए rather than putting it in a full plate. That will give your eyes a sight of a full plate rather than बड़ी प्लेट में थोड़ा खाना कम लगेगा, थोड़ी प्लेट में खाना ऐसे लगेगा काफी ज्यादा भरा हुआ है. सिमिलरली जब आप कोई बेवरेज ले रहे हैं तो आप टॉल ग्लास में लीजिए, लंबे और पतले और टॉल ग्लास में, आपको लगेगा यू आर हैविंग अ फुल बिग ग्लास फुल ऑफ सम बेवरेज. वही अगर आप छोटा और चौड़ा ग्लास लेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कम लिया है. यू विल ऑलवेज गो फॉर अ सेकंड सर्विंग व्हिच इज अवॉइडेबल. Okay. So that is one way to trick your mind with portions. Then one more point which I would like to say is don't divert from your regular routine. So काफी बारी देखा जाता है कि फेस्टिवल के दिन हम लोग अपनी दवाइयों का टाइम चेंज कर देते हैं, इंसुलिन लेवल्स को बढ़ा लेते हैं कि आज हम ज्यादा खा लेंगे, इंसुलिन ज्यादा ले लेंगे, या फिर हम अपने नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल बच हो जाते हैं, हम अपनी एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, जबकि हमें ऑपोजिट करना चाहिए. व्हेन यू नो दैट आज आपने खाना पीना ज्यादा करना है, you should be more aware of the timings, you should be more aware of your medicines, you should be more aware of your exercise routine. So try to follow your routine as usual when you are going to splurge for a day. So that is one very important thing कि उस दिन अपना रूटीन बिल्कुल नॉर्मल रखिए, अपना नाश्ते का टाइम वही रखिए, अपनी मील टाइमिंग्स को नॉर्मल रखिए. डोंट स्टार्व फॉर द होल डे टू एंजॉय वन मील, राइट? दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग जो हम जनरली गलत करते हैं. सो ट्राई हैविंग ऑल मील्स, नाश्ता भी करिए, लंच भी करिए, चाहे छोटे छोटे पोर्शन में करिए. एंड बिफोर यू आर स्टेपिंग आउट फॉर डिनर और मे बी गोइंग टू अ फ्रेंड्स प्लेस और कॉलिंग पीपल ओवर, ट्राई कि आपने उससे पहले एक हेल्दी स्नैक लिया है, राइट, ताकि जब डिनर शुरू हो आप एकदम से खाने की तरफ पढ़ के ना आए कि एकदम से आपको भूख लगी है. एंड जनरली डायबिटिक्स में हाइपोग्लाइसीमिया इज आल्सो वेरी कॉमनली सीन. सो वी हैव टू बी वेरी इट्स इम्पोर्टेंट श्योर कि हाइपोग्लाइसेमिक किसी को कोई भी हाइपोग्लाइसेमिक शॉक नहीं होना चाहिए. सो यू शुड बी ईटिंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे. दैट इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू बी डूइंग. Then next thing which I would like to say is snack the right way. Okay, so snacking, everybody likes to snack and we feel the need to do it more when the festival. yeah, Because कितनी सारी चीजें हमारे सामने पड़ी होती हैं, so we just feel like कि we want to have something or the other. So in that way, snack the right way. Try keeping healthier options in front of you, like nuts हो गए, आप almonds को roast करके रख लीजिए, ऐसे ही आप seeds का mixture रख लीजिए, homemade granola रख लीजिए. You can also make makhanas, you can make salad का एक bowl बना के you can keep in the fridge and keep having that after some time. You can have hummus with some carrot sticks or cucumber sticks. So you can keep some like ragi chips या something like that. So you can make these healthy options and keep them ready for snacking rather than snacking on like maybe something fried जो generally हो जाता है. potato chips, yeah. Yeah, so you should and also try making ये घर में बनी हुई चीजें in the air fryer. So that is also even मतलब on a festival day जब हम कर ही रहे हैं cheat, fine, have potato chips but make it in the air fryer. So you can save yourself from at least frying. And air fryer is now very commonly available in everybody's house.
Okay, so if that is an option, आप air fryer में बना लीजिए. So you can make little samosas, keema samosas or something like that, and you can make it in आटा, not मैदा. So घर की बनी हुई थोड़ी मेहनत लगेगी, but आपके पास variety बहुत हो जाएगी खाने के लिए अगर आप घर पे कुछ भी चीजों को बनाने की effort And what करते हैं. about pineapples and cheese as You can snacks? have that. You can But have that. in moderation. इन मतलब, मॉडरेशन. it doesn't make मॉडरेशन तो मैंने स्टार्ट करने से पहले ही आपको पहला पॉइंट ही मैंने मॉडरेशन दे दिया है. disclaimer. यस, ठीक No. है. You can also add cherry tomatoes to that concoction of pineapple cheese and cherry tomatoes. They are very good on sticks. So these are considered in good snacks. So snacking के ideas में ये one of the good snacks में आता है. Also, what it'll help is to fight COVID and to build immunity because nutrition भी तो levels चाहिए ना. Exactly, we have to right now we have to focus a lot on immunity. हम जितना घर का बना हुआ खाना खाएंगे, जितना हम fresh ingredients use करेंगे, कि जितना हम fruits and vegetables include करेंगे, will be better for us rather than having anything which is sourced from outside, right? Then stay active. So it's very important that अगर हम डाइवर्ज करने वाले हैं और हम लोग अपना खाना पीना बढ़ाने वाले हैं इन द कमिंग फ्यू डेज, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू आल्सो स्टे एक्टिव. आप अपनी वॉक्स रेगुलर रखिए बिकॉज वॉक्स डू हेल्प इन मेटाबोलाइजिंग शुगर. So do that. अपनी वॉक्स रेगुलर रखिए. अपना कोई भी एक्सरसाइज का फॉर्म, whatever you were following, whether it be yoga or it is zumba, whatever exercise आप follow कर रहे हैं, aerobics and all, just try doing that. That is also very important कि अपनी physical levels को आप बिल्कुल ठीक रख रहे हैं and you are not going slow on activity level, right? Suppose if you get a phone call, try taking your phone call by just moving around in the room. So that way you walk for 10 extra minutes. So आप जितना एक्स्ट्रा वर्क कर लेंगे इस टाइम पे उतना आपका शुगर लेवल्स बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग हियर कि दैट वी ईट एंड वी डू नॉट hamper our sugar levels and we don't have to adjust our medicine dose accordingly. Right? Then prepare for the party. So now finally we reach the party, which is, I don't know, happening or not, but for prepping for the party, as I told you last time, try having a meal before you leave for the party. Have something which is wholesome, have something which is very high on fiber, which is a good amount of protein also, that stays in your track for a long time. Usko digestion mein time lage so that when you reach there you're not very hungry. So a good protein snack is a good idea. You can take eggs with multigrain chila, you can take a multigrain sandwich, you can take hummus sandwich, you can also take a stuffed paratha, अच्छा सा wholesome paratha with maybe palak or methi before you leave your house so that you're It's full. got very high glycemic levels ना, वो भी तो मैदा है. Who? What? Bread like a slice, you're saying a sandwich. A multigrain bread, try taking a multigrain bread with seeds and all. So now very good breads are available. You can even bake a bread at home. So home bakers are doing a very good job in making good bread. So you can have that and it's easy. So don't go for breads जो बिल्कुल market में जो आपको मिलता है बिल्कुल brown white, जिसका सिर्फ color अलग है, bread में कुछ फर्क नहीं है. So you will have to invest a little more on the good quality of bread, or you make a homemade bread. So making a bread is very easy at home आटे से. आप हमें दिखाएंगे तो हम inspire हो जाएंगे. Definitely we'll do a session on some cooking one day. Done. Yeah. Great, and नहीं. And also, last but not the least, keep yourself hydrated, drink lots of fluids, have a lot of water. Most of the time we are thirsty, but हमें लगता है हमें भूख लगी है. So just keep sipping water. You would always feel full and not feel the urge to eat again and again. So that is one tip which will really help you. Okay. And if you are consuming alcohol, consume a lot of water with that as well. So a glass of alcohol should be equivalent to 2 glasses of water later on. So keep yourself hydrated. Okay. So these are few tips which, if you follow, very easy tips, you can maintain your sugar levels, yet you can enjoy the festivities and you can also build your immunity in these tough times. Excellent. Thank you so much. One last question, and I know it's already 7:41. We're 41 minutes beyond. Or just about, we'll start winding up. आपने कहा था eat frequent meals. In fact, I've been doing a lot of conversation with multiple endocrinologists, and I want to hear आपकी tip.
So type 1 should be eating frequent meals. In fact, ADA कहती है, American Diabetes Association, के 6 छोटे meals खाओ दिन में. However, आजकल intermittent fasting, you know, is this new rage, and many doctors are in fact saying कि ये अच्छी चीज है. Not for type 1, See, but for type 2 definitely. intermittent fasting was always there. It is now by the name of intermittent fasting, so it is a rage. Otherwise, sundown के बाद हम लोग naturopathy में, आयुर्वेदा में हमेशा से खा रहे हैं, right? So having your last meal नहीं at खाते हैं. 6:30, हाँ, हाँ, नहीं खा रहे हैं. हाँ, खाना चाहिए. So having your last meal at 6:30 or 7, Yeah. and wrapping your day and having the next breakfast 10 means intermittent fasting. So you're Hmm. not doing anything out of the box. राइट आप अगर 7 साढ़े 7 बजे खाना खा रहे हो, अगले दिन 7 साढ़े 7 तक वैसे ही आपका मॉर्निंग हो गया, राइट? 7:30 तक इट्स ऑलमोस्ट 12 hours. So you can just have your meal after, you can have your breakfast at 9, 9:30, 10. So that is called intermittent fasting. So intermittent fasting is basically early dinner. Okay, so Right. early dinner is always a good practice, even if it is for diabetics. It is very good because it will help you lose weight. It will help you lose abdominal obesity, and it will also help you in metabolizing your sugar and give you more time to digest. And when we say 6 meals, you can have 6 meals in the day, right? Even with that, आप अपना 10 o'clock अगर breakfast लेते हो, 12 o'clock एक fruit लेते हो, 2 o'clock अपना lunch लेते हो, 4 o'clock you take another salad or fruit or seeds or nuts का mix लेते हो, 6 o'clock if you take a tea or coconut water and you wrap your dinner by 7, you're doing 7 meals, not even 6. Okay. And इतना हम खाते हैं. So actually the problem is we don't consider one fruit as a meal. So for us meal is कि 6 meals खाने बैठ जाएंगे. You don't have to eat 6 meals. You have to just eat 6 times, which can be a fruit also. And it's important to include, ये जितना भी आपको 6 meals a day बोला गया है, ये इसलिए बोला गया because they want to encourage people eating more fruits and vegetables. They are not saying that eat more grains. कि आप सुबह से शाम तक चावल रोटी और grains खा रहे हैं 6 meals. So nobody can save you from gaining weight or fighting obesity or diabetes. So it's important. And on this note, I have to tell you, हमने recently we had interviewed a gentleman called Dr. Jagat Narula. He's Mount Sinai. Sinai as the New York people would call him, या Sinai जैसे हम बोलते हैं. He's an associated dean. उन्होंने कहा कि पोटैटो चिप्स जो मिलते हैं मैकडॉनल्ड्स वगैरह टाइप के अमेरिका में, कहते हैं सब कहते हैं ये बड़ा अनहेल्दी है. बट ही सेड, आशा, लुक एट द इंडियन मील, समोसे, राइट? इनफैक्ट कल धीरज जी ने भी यही कहा था, एंड आई मेड द सेम पॉइंट अगेन. ही सेड समोसे में आलू खा लो बीच के, बिकॉज आलू इज नॉट बैड, बट हम लोग क्रस्ट जो खाते हैं, यू नो, द मैदा फ्राई करके, deep fried, not just fry, deep fry. So you know, it's a myth कि चीनी खाने से डायबिटीज में प्रॉब्लम है. It's not that. It's everything. Right. हम भूल जाते हैं that even milk has चीनी in it. You know. Your overall diet has to change. Your overall lookout lifestyle has to change to cure diabetes. And diabetes is nothing to be fearful about. You can easily manage it with lifestyle. It's so easily managed. But we choose medicines over following diet and exercise because that's easy. गोली पॉप करना हमें आसान लगता है, but हम ये नहीं देखते लॉन्ग टर्म में वो हमारी किडनी पे कितना इफेक्ट कर रहा है. और यही चीज हम कम से कम अपनी डाइट्स को ठीक करके उसको नॉर्मल रख सकते हैं. बट दैट्स द सैड पार्ट अबाउट दिस कि सेल्फ कंट्रोल इज नॉट इजी. You eat through your eyes, na? So if it looks nice, then you'll land up, you know, with a couple of more helpings than you should be of all the wrong things. Yes. And the bigger foodie between us, clearly. Okay. On this note, I know you're not feeling too good today, and thank you. आपने बहुत time बिताया. Doc will have to do another session very quickly. Just on the glycemic foods वगैरह पे, and we'll talk about some more recipes. जाते जाते, I just want to hear your comment. आजकल बहुत apps निकले हैं, right? Every second person, at least on my Facebook feed, is this app which suggests diabetes का खाना, or that app, or the other app. So I wonder ki, should I be following those apps, or, you know, then how would you explain your role in this? But I'm sorry,
I don't mean to offend you, but No, it's no, of say course, that yes. you've been spending 10 years like doing deep thought and studies and fixing people. What is your perspective on See, I firstly think ki, yes, some of the apps are really helping people to at least know in broader sense, the right and wrong about food. But right? when it comes to treating medical problems, or wo bhi jab specific to a person ho, these apps are not to be relied on, right? Hmm. Because every person has a different lifestyle, every person has a different need, every person has a different goal, and also their medical problem may be very different from a second person. इवन फॉर एग्जाम्पल अब कोविड है, किसी को 99 फीवर पे है और कोई वेंटिलेटर पे है, राइट? सो ट्रीटमेंट तो सेम नहीं है ना दोनों का. The Yeah, severity of the disease is very different in both people, right? yeah, So these apps can only give you a general broad sense of do's and don'ts, which is also available on Google. But to get a proper advice to your own body and self, if you're really serious about you, an expert advice is obviously needed. uh, And that would in fact that would help you to recover sooner than running around the trees for years and then getting tired and leaving it eventually. okay. So, moral of the story: go have fun uh, in moderation. Just to Yes. put you this Diwali, let's all be a little responsible. Dr. Vandana, I can only thank you enough. Two things I would request my viewers. दो चीजें मैं बोलना चाहूंगी. सबसे पहले, please follow our page. If you like what Dr. Vandana said, एक बारी लिख के भेज दीजिए that we like the session and we want to do a lot more of these. We'll make sure we do that. The second thing is, if you want to, personally do a consult with Dr. Vandana, let us know. Yeah, support@famhealth.in. आइए बताइए, या आप फैम हेल्थ कम्युनिटी पे भी आ सकते हैं. We'd be only too happy to get you the right expert advice. Okay, what more can I say? It's about our health. Would you trust, just anybody else? All right, Dr. Vandana, get well soon. I cannot thank Thank you. you so much. Yeah, and wish you a really, really happy Diwali. Same to you and same to all the viewers here. I'm very happy to address you all today. And I really hope I made a little difference in your life today by sharing some insights about diabetes. All right. Thank you so much, and look forward to everybody's views. Thank you. Bye now. So I'm going to end Bye this. bye. Yeah, bye. I'll just end this meeting. Thank you, viewers.